Hello everyone, we are going to start our second atomic property, that is metallic character. You know children, any element is said to be a metal when it have tendency to lose electron and become electropositive. तो सिर्फ एक मेटल के पास ही मेटेलिक करेक्टर होगा एंड मेटेलिक करेक्टर डिपेंड अपॉन टू फैक्टर. एक होता है एटॉमिक साइज और दूसरा न्यूक्लियर चार्ज. विद द इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो मेटेलिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा. हाउ इज़ इट पॉसिबल, लेट्स सी. जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियर चार्ज एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, इंक्रीज करेगी. और अगर इंक्रीज करेगी तो इट विल बी ईजी टू लूज इलेक्ट्रॉन. अगर इलेक्ट्रॉन ईजी है लूज करना तो मेटेलिक कैरेक्टर विल इंक्रीज. इफ़ वी टॉक अबाउट द न्यूक्लियर चार्ज, जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा the attraction between the nuclear charge and the outermost electron increases and it is not easy to lose electron. इसलिए metallic character क्या हो जाएगा, घट जाएगा. Let's study the trends of metallic character. Here is the periodic table. as we go along the period metallic character decrease. How it decrease, let's see. As we go along the period, you know children, atomic size decrease. Due to the decrease in atomic size, outermost electron is attracted with the greater force. If size decreases, the outermost electron is attracted with the greater force and it is not easy to lose electron. So as we go along the period, atomic size decrease and the metallic character also decreases. If we talk about down the group, as you all know, as we go down the group, atomic size increases, and due to the increase in atomic size, the distance between the nuclear charge and electron also increases and it is easy to lose electron. So metallic character down the group increase. If anybody asks, name the most metallic element in the periodic table, that is francium. Francium is the most metallic element in the periodic table, my dear.